the moderator of our next panel, which is Ms. Alia Ahmed. Do we have Ms. Alia here? I'd like her to please come up on stage. Thank you so much. She's the Senior Vice President for UBL and is going to be the moderator for our next session. A round of applause for Ms. Alia. The world is moving from bricks to clicks. Simultaneously in Pakistan, हमने भी एक digital Pakistan का नारा लगाया, which is a dream that we are looking at. And be it any industry, we are seeing the digitization process और COVID-19 ने उसको further accelerate किया. I think सुबह से हम बात कर रहे हैं healthcare industry, technology, and how do we marry these two in order to reach out to the masses. Also, जो कल I think कुछ लोगों के साथ ये discussion हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि how do we change the mindset और ये एक जो brick and mortar led industry को हम कैसे transform करें जो patient को focus कर रही हो जो industry. So इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे आज और जो हमारा topic है basically decoding tech infrastructure कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है. We've got 3 panelists. We'll be a little lonely up here because 2 of them will be joining virtually. So we've got Zarar Khan, Chief Business Service Officer, PTCL. We've got Khurram Jamil Saab, CEO and MD Siemens Healthiness, and Shehzad Rashid Saab, who is the CEO of Huawei Cloud. A big round of applause for all these 3 panelists. You can hear us, Zarar Saab, Khurram Jamil Saab? Can you say something so that I make sure that हमें भी आपकी आवाज़ आ रही है? Thank you for having us here. I think we need to fix the volume. I can't hear them clearly. Can you hear me now? Yeah, much better. Zarar Saab, can you say something, please? Ji, Assalamu alaikum. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Thank you very much. अच्छा जी, so हम बात कर रहे हैं devices की, sensors की, wearables की, जो कि accelerate करेंगे ये healthcare reach to mass population, and especially in remote areas. So in Pakistan, how do you see this? I will start from Zarar Saab. Ji, thank you very much, and apologies that I could not join in person. I just flew in from Barcelona this morning. Thank you again for involving me. I think before we delve into the specifics of your question, we need to expand the conversation a little bit. And that is talking about technology without talking and taking policy into account will not yield the benefits which are really required. So, normally the pyramid banta hai health tech ke upar, it starts with policy, so which is the government and the other policy maker. When the policy is there, then you have to set the plan, the strategy. So, how are you going to enable whatever the objectives of that policy is? उसके बाद जब आप next step पे आते हैं, तो then it is the enablement, and enablement में infrastructure enablement is the primary enablement driver. And after the enablement, then you have the applications. And applications के बाद जो bottom of the pyramid होता है, that is the users of the care industry, which are the caregivers, चाहे वो doctors हो, pharmacies हो, hospitals हो, या patients हो. What has happened from the tech sector right now is that the first step has started. So as you may be aware, कि जो गवर्नमेंट का डिजिटल पाकिस्तान विजन है, enabling technology in the healthcare sector is actually playing a very major role in that. And in the current PDSP allocation, there is one specific project which is called One Patient, One ID. Right now, the health tech sector, especially when it comes to patient information, that is very, very dispersed and it is not unified. So the first project, which is One Patient, One ID, I think that is going to enable centralization of patient information, which would form the data lake upon which all other technologies are going to be built. So I think from a tech point of view, I think first step has been taken. The policy
box has been ticked. One of the key ingredients that is to unify the patient information, activities have started under the One Patient, One ID project. And now what we really need to do is first we need to understand what are the requirements of the industry. A lot of time what happens, especially organizations like myself, so I represent Pakistan Telecom, owned 62% by the government of Pakistan, and we have been tasked with the enablement of the Digital Pakistan agenda. We are not from the healthcare industry, and sometimes we take our mindset of technology and we try to adopt in developing solutions on what can be done. So I think what needs to be done is that we are attending events like this. We are reaching out to our different players in the healthcare industry, whether it is the pharma industry, whether it is the hospitals, whether it is the technology diagnostics providers like Siemens Healthcare, which I think Khurram would talk about, or it is the patient itself, and we want to understand what is the problem and, more importantly, what is the need. Because unless and until we as PTCL do not understand the need very well and also deploy and develop solutions that can address those needs, a lot of time, effort, and money would be spent, but we would not be able to unlock the value that is actually required to form the catalyst of enablement of health tech. Yeah, you're absolutely correct. I think identifying the need first and exactly offering solutions related to that need is the key. And Khurram, I would come to you with that. I mean, मैं mindset की बात करी थी. I come from the financial digital sector. और हमारे पास solutions हैं, अपने app, net banking के solutions अपने customers को दिए हुए. But what we see over there is कि उनकी तरफ से एक hesitation है going towards technology. So in healthcare system, are you seeing the same thing? Both from the offering part as well as from the adoption part? Thank you very much, Alia. And I think I appreciate everyone, and especially the AIMS guys. They are doing an amazing job. Unfortunately, mujhe bhi travel ki wajah se I could not be physically present there. But I think thanks to this whole digital world, we can actually see and feel each other through the video and through this digital platform. अच्छा आलिया आई थिंक मैं जरा साहब से तो बड़े एग्री कर रहा हूँ. देखिए जी पॉलिसी बनना है, लेकिन पॉलिसी से भी अगर हम पीछे जाएं, व्हाई यू एक्चुअली डिजायर to have a policy, because there is a complete momentum, inertia comes from the technology. हम कहते हैं जी टेक्नोलॉजी है ना, आप उसको रोक नहीं सकते. अब मुझे back in the days I was a BlackBerry guy, और मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक उसको रोकता रहा कि जी मैंने टच पे नहीं जाना. And eventually what happened, you actually transferred it because you wanted to be part of the new regime. The new regime is the touch screen, the new regime is the iPhone, then so on so forth. अब हमारे पास अब जब कह रहे हैं फिनटेक वाले, अब जितना भी आप तो माशाल्लाह कह रही हैं कि जी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के अंदर यू गाइस एक्चुअली फेस द सेम कल्चरल इशू. बैक इन द डेज अर्ली 2000 में जी आपको सिटी बैंक वाले बड़े आराम से गाड़ियां देते थे, फिर आपके सैम होते थे, और सैम गाइस क्या होते थे, जब किसी ने डिफॉल्ट हुआ they will stop you at the red light and the red screen and they basically ask you, please get out from your car because this is owned by Citi. अब क्या मैंने क्वेश्चन ये कर रहा था, ये 3-4 नए स्टार्टअप्स खुल रही हैं आपकी फिनटेक में, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. अभी TAG वाले जो उनसे हमने 70 मिलियन का सीड राउंड किया. अब प्रॉब्लम ये है जी कि देखें, आप कल्चर चेंज इसलिए करेंगे, कल्चर चेंज करना पड़ेगा. द प्लस पॉइंट ऑफ दिस होल टेक्नोलॉजी इज कि आप एक बहस ये भी तो होती है ना कि आप जी देखें पानी या कोई चीज़ है नहीं एक रहीम यार के छोटे से इलाके के करीब, लेकिन वहाँ पे लोग मोबाइल फ़ोन पे टिकटॉक और वो चीज़ वहाँ पे मिल रही है. सो आई सी इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि यार जो मोबाइल फ़ोन भी एक यूटिलिटी बनना है. हाँ आपका विजन कम था, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अब आपके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन होना भी चाहिए. द रीज़न इज दैट कम्स डाउन टू दिस होल हेल्थ टेक थिंग. I mean, you played the actually what we call the minority report of the medical device piece. Basically, what we actually said is that you actually, if you face any trauma or any anatomical changes आपके पास अगर आपकी बॉडी में आते हैं, हम उससे पहले आपको आपकी सेहत के लिए पहुंच जाएं. So that is possible only through the platform on this digital IT world. So a person who has a mobile phone has a 5G, 4G networking, and Pakistan is getting there. I mean, it's this tremendous force of everyone having the access of internet. It's a good thing. It's not a bad thing. Yes, there are always a bahas ke ji ye achhi cheez hoti hai to wo buri cheez hoti hai. Lekin let's talk about the good things.
अब मैं वहाँ पे DHQ के थ्रू वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था एक अच्छे डॉक्टर को पहुँचाना, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा लिखा डॉक्टर था वो कहता था जी मैंने मेट्रोपॉलिटन में रहना है, मैंने कराची में रहना है, मैंने इस्लामाबाद में रहना है, मैंने वहाँ पे रहना है। अच्छा, दूसरी बात आपने कल्चर की कि जी कल्चर, जब तक हम डॉक्टर के पास खुद चल के नहीं जाएंगे, उनको नब्ज फील नहीं कराएंगे ना, तब तक जी मुझे मजा नहीं आता। क्या ये लोग एक वर्चुअली किसी डॉक्टर के सामने बैठ के हमारे बुजुर्ग या हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, या मैं उसको कहूँगा लेट 60s की पॉपुलेशन है, अब बहस ये है कि उन्होंने 2013 में तो शायद उनके पास अब ये टच स्क्रीन वाले टिकटॉक और यूट्यूब उनको चलाना नहीं आता था, लेकिन अब वो 7, 8, 10 साल के अंदर दे नो हाउ टू डील विद इट, क्योंकि वो आपको बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आपके घरों में घुस रही है फॉर गुड। सो पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बननी इस वजह से जरूरी थी कि उनको पता लग गया कि भाईजान ये हमें करना पड़ेगा। हमने पीस की केबल तो लगा दी, ठीक है जी, हमने आपके अरेबियन सी से अंडर सबमरीन केबल लगा के आपको ईस्ट अफ्रीका से कनेक्ट कर दिया, इट्स अ ह्यूज थिंग। हमारे 5-6 अब सैटेलाइट भी चले गए हैं, अब आप 7,000 सैटेलाइट की बात करते हैं जो आपकी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। हाफ ऑफ अबाउट 30-35% आर कम्युनिकेशन बेस्ड। So access to healthcare, which we believe is the key for us as in Siemens Healthineers, we believe कि जी access to healthcare होना चाहिए। पाकिस्तान being a 220 million population country, हमारा बजट, हमारी एक्सेस टू पीपल बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हमने, अब जरार साहब ने कहा, अब आप टेलीनॉर वालों से बात करें, बाकियों से भी बात करें, तो वो बात यही कर रहे हैं कि हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं। अब हम टेक वाले, जो हम मेडिकल टेक है या फार्मा है, हम इसको एक कनेक्टेड फॉर्म के थ्रू उनको प्रोवाइड करें वो चीज जो कि शायद एक छोटे से इलाके में इंटीरियर सिंध में एक बंदा ट्रॉमा से गुजर रहा है, हम उसको रिमोटली सर्जिकल प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकें। ये हो सकता है और ये हो रहा है, हम इसको पसंद करें ना करें, लेकिन ये हमारे वक्त की जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है। एंड आई थिंक कल्चर चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन कल्चर भी चेंज हो गया है। What we or you Alia saw back in early 2000, now people are accepting easy paisa, people are accepting sending money through the digital forum. So there is change, and we are going to be part of it, and we have to appreciate it rather just reject the cost itself. बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे पॉजिटिव्स होते हैं और ऑब्वियसली वो आपको एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ न्यूसेंस वैल्यू भी होती है। सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, उसने बड़ा बड़ा नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ था कि अगर आप गूगल का प्रिस्क्रिप्शन ला रहे हैं अपने साथ तो डोंट इवन बॉदर टू स्पीक टू मी। सो ये भी होता है साथ में। तो शहजाद, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेडिकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो मार्केट है, ये इट्स ऑलमोस्ट रीच 136 बिलियन। हाउ डू यू सी दिस इन पाकिस्तान? हमारे यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट इन कंपैरिजन टू द वेस्ट, वेयर डू वी स्टैंड टुडे? So thank you, Alia. First of all, I think great job by Ali. I think I haven't seen such type of interactive sessions before. So I think this is your USP. So coming back to your question, IoT, what I see is now IoT has multiple advantages. So other than the commercial benefits and all these things, so जो मुझे सबसे बेहतर IoT का advantage लगता है ना, it is moving patients or we as humans towards the preventive care. So humans start engaging with the IoTs and they start engaging with their health care, with their health, right? मुझे अगर मेरी स्मार्ट वॉच जो है वो दिन में 2 अलर्ट्स जनरेट करके देती है कि योर एक्सरसाइज पैरामीटर्स आर गोइंग डाउन और तुम वॉक नहीं ठीक कर रहे और तुम्हारी, सो दिस इज बेसिकली फॉर मी इट्स एंगेजमेंट विद माई हेल्थ. So prevention is coming into the picture with IoT. So I think this is one of the bigger advantage of IoT. Now second, going back, I think इससे पहले एक जो पैनल था, टेलीमेडिसिन वाला, और मैं खुरम की बात से एग्री करूँगा कि टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज मेक इट्स वे, इट्स नॉट अ चॉइस. इससे जो टेलीमेडिसिन की जो प्रॉब्लम था, जो वो पैनल डिस्कस कर रहा था, अगर आप उसको रिलेट कर सकें, जो टेली कॉन्फ्रेंस वाला टाइम आया था, यू रिमेंबर, आज से 10 साल पहले वी वर नॉट विलिंग टू हैव दिस टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंस और जूम मीटिंग्स जो हम आज कर सकते हैं. एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कोविड पुश अस कि हम ये काम करें, और हम अब जूम इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट. हम ये टेली कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. ज़रार साहब बार्सिलोना बैठे हैं, खुरम आई थिंक समवेयर एल्स, एंड वी आर हैविंग अ वंडरफुल मीटिंग हियर. सो
द चेंज, द कल्चर, ये जब तक पेनिट्रेट नीचे नहीं होगा, और ये आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है. यू हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस. जिस तरह अनफॉर्चुनेटली कोविड ने ये किया, बट आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू जंप इन. ज़रार ने जो बात की कि जो पॉलिसीज़ देयर, वी आर वेरी गुड एट पॉलिसीज़. वी एस आई मीन व्हेन वी आर बैड एट द पॉलिसी, हमने पॉलिसीज़ में तो ज़बरदस्त काम करते हैं. द प्रॉब्लम इज़ विद द एग्जीक्यूशन पार्ट. आज भी आपके टर्शरी हेल्थ केयर, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर, दे आर ऑल डिस्कनेक्टेड. दे आर ऑल डिस्कनेक्टेड. अगर मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं जब अपने प्राइमरी हेल्थ केयर में जाता हूं, मुझे सारी स्टोरी सुनानी पड़ती है, जो कि मुझे जब DHQ हॉस्पिटल में जाता हूं मुझे दोबारा सुनानी पड़ती है, और जब मैं पिम्स या इधर जिना हॉस्पिटल कराची में आता हूं तो मुझे सेम स्टोरी दोबारा सुनानी पड़ती है. और मैं अगर पढ़ा लिखा हूं तो मे बी आई वुड बी एबल टू ब्रिंग माई रिकॉर्ड्स विद मी. और अगर मैं नहीं हूँ तो हो सकता है मेरे से कोई फाइल गुम जाए, मेरे से कोई टेस्ट गुम जाए. वही टेस्ट मैं अपने गांव में करा रहा हूँ, वही टेस्ट मैं अपने DHQ में करा रहा हूँ, वही टेस्ट रिपीट करवाए जा रहे हैं मुझसे आके शहर के अंदर. सो दिस इज आई थिंक वी हैव टू चेंज इट. और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आई थिंक वी आर टॉकिंग सो मेनी फैंसी थिंग्स, बट Ministry of IT is doing good job for the digitalization. But the question is, where the Ministry of Health? Where is the role of Ministry of Health in digitalization? They are the most important stakeholders, right? So they have to come in. So IoT, I strongly, coming back to your question, I think IoT, I strongly agree, it has a role to play. It will change the whole healthcare system, the entire ecosystem, it will change. But हम उसके लिए एज ए कंट्री उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, चाहे वो कमर्शियल मॉडल है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे वो पेशेंट की वेलफेयर है. आई थिंक वी हैव लॉट टू डू. खुर्रम की इस बात से मैं टोटली देयर इज़ अ होप, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि ये जो प्राइवेट सेक्टर और 5G और 4G और ये जो कनेक्टिविटी के आने से, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ partially there. I won't say fully there, partially there. But how to strengthen up and how to make the complete ecosystem so that मैं अपने इस IoT या आप इस IoT या गांव में बैठे जो लोग हैं वो इस IoT से फ़ायदा उठा सकें. There are a lot of gaps and we have to fill these gaps. So this is, I think. Absolutely. And Zarar Sahab, I know PTCL is बहुत सारे काम कर रहा है in order to bring this infrastructure. आपके अपने personal experience हैं. What do you think are some of the major challenges that we are facing here? There are 4 actually. So the first one which we have felt is there is a lack of coherent national, provincial and regional strategy on how we are going to enable the health tech. As you know, after the 18th Amendment, जो healthcare industry है वो devolve हो गई है provinces में. Each province is tackling the challenge at its own mindset. So वो हो क्या रहा होता है कि कुछ जगहों के ऊपर they have decided to, for example, move to the cloud. Some of them are saying कि नहीं, we don't need to move to the cloud. There are certain provinces जो कि आके बात कर रहे होते हैं कि अब जो नए हमारे diagnostic की equipment आएगी उसके क्या parameters होंगे so that it can be connected. So this is the first part, which is making sure that all the stakeholders are aligned. Because if that is not done, that is only going to increase the cost and the time and the complexity in achieving our ultimate goal. The second thing, which is the key problem, that is the enablement of the key stakeholders. इस वक्त आप अगर BHU में जाएं, किसी रूरल हेल्थ यूनिट में जाएं, मदर एंड चाइल्ड में जाएं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट में जाएं, या इवन किसी बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी चले जाएं, जो ICT की अंडरस्टैंडिंग है, that is very, very primitive, and people are still focused on going after the manual systems. There are 2 reasons for that. The first one is, it is the fear of the unknown. And secondly, ICT also enables accountability. The third part, which is a key challenge, that is the lack of adequate mobile broadband reach. Pakistan के अंदर 4G 2013-2014 के अंदर आना शुरू हुआ. Even there are about 45% of our population which does not have access to high-speed broadband facilities. So that would mean कि अगर we need to do remote diagnostics, and आपने IoT का सवाल किया था. IoT की enablement के लिए one of the most critical factor is having a reliable, resilient and fast connectivity.
That is the fourth thing, which is a bit of a challenge, and it is probably one of the major challenges. जिसको national level के ऊपर we need to formulate a plan, and we really need to see how we are going to enable. I'll just give you an example. There was a project by the government of Punjab, which it was a World Bank funded project, and the key parameter was कि जो infant mortality होती है, infant mortality को हमने नीचे लेके आना है. And one of the largest contributors to infant mortality is the deaths that happen during childbirth. And the reason why deaths happen during childbirth is if there is a certain complication during the childbirth, it is not possible for the mother to reach the hospital in time and all those sort of things. So there was a sort of a project, a highly successful project, in which certain districts were enabled with connectivity, so that whenever there is a need, instead of the mother getting to the hospital, the caregivers were coming to the mothers, and that had very significant reduction in mortality during the childbirth. However, during the expansion, one of the biggest challenges that was felt was 4G was not there. The last point, which I think is very critical, is the fact that what is going to be the ultimate funding mechanism? Because there are different elements to it. Today, if you want to say that, okay, hospitals are going to be digitized, who is going to be funding it? Is it going to be the government which should be funding it? Should it be the stakeholders that should directly or through insurance be funding it? Should we start to reduce the cost of funding because health tech startups which are coming in, they need to come up with some innovative model which is not as costly as what is available right now. So I think these are the four key pillars that we really need to go ahead and crack. And what we are doing as PTCL is that we are taking a three-pronged approach. The first approach is that we need to reduce the complexity of enablement. So we have, under the guidance from the government of Pakistan, we have set up a health tech vertical, and now we are in the process of setting up a health tech cloud. So that would mean that any of the health tech startups that are here, they don't need to worry about where they are going to be setting up their application and infrastructure. It would be set up locally, and then as PTCL, we need to make sure that at least the large hospitals, the medium hospitals, and also the clinics and pharmacies have been provided connectivity so that there is no cost of connecting to those applications that is set up. The second part is that we are now reaching out to the large diagnostic companies and the IoT companies in the health tech ecosystem, so that we can create the APIs and the middleware. So regardless whether it's a government hospital or a private sector hospital or a clinic or a sort of a laboratory, as soon as they buy the equipment, they can start to store their data on the cloud. And that is going to also reduce the cost of storage, because cost of storage, especially when you're looking at MRIs and all those high resolution imagery, that is very high. The third thing that we are going ahead and doing is that we are coming up with a product, inshallah, in a quarter it is going to be launched. It is the smart pharmacy, smart clinic, and smart hospital. So that would mean that it is not the job of the hospital or the pharmacy to run infrastructure. That they should focus on their primary, area, which is, healthcare. All the infrastructure should be, outsourced to an organization such as PTCL that can do it more effectively and more cheaply. And the last part is on the education side. One of the reasons why we as PTCL are participating in this forum, and we will inshallah continue to get a leading, we will be a leading voice in this area, is that we should reach out and we should make sure that the education across everybody, जैसे I can remember forum ने भी यही बोला था कि जो इस वक्त हमारे elderly population है, they have an aversion to technology. They may not be that much keen to take up technology rather than go and physically meet a doctor. So we need to go out into the market and play our part
so that the changing of mindset, whether it is at the patient level, whether it is at the caregiver level, or it is at the a provider level, that mindset can be changed. All right, thank you very much, Rasa, for such a comprehensive reply. Khurram and Shehzad, this goes to both of you. And Ali की जो conferences होती हैं वो बहुत action oriented होती हैं, solution oriented होती हैं. तो उसी सिलसिले में अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों के पास ये option है कि आप Ministry of Health basically आप run कर रहे हैं, तो what are the immediate 2-3 steps जो कि हमें फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है? So you can go first, Khurram, and then Shehzad. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें जी, उन्हें फौरी तौर पे क्या इक़दाम करने चाहिए? If that's the question, I think that's the question, right? Yeah, if you're given the powers to transform this in Pakistan, keeping in mind technology as well, so then what are the immediate steps that you would do? I think हम सारे माशाल्लाह भी शहजाद भी हैं, ज़रार भी हैं, आप भी हो, ये जो भी चीज़ करने से पहले तो हम कहते हैं ना कि जी बजट कौन अप्रूव करता है. अगर आप हमारा बजट चेक करें ना मिनिस्ट्री ऑफ या हेल्थ के ऊपर जो हम स्पेंड करते हैं, it is not even comparable to anything anywhere. डेवलप्ड कंट्री को तो छोड़ ही देंगे, नॉर्वे या यूनाइटेड स्टेट्स को, हम तो 1% पे भी पहुंच जाने बड़ी बात करते हैं. ठीक है, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर भी हम USAID या मेलिंडा गेट्स के पास भी पहुंच जाते हैं. तो हम अपने बजट से ना ऑर्गेनिकली बजट नहीं अप्रूव करवा पाते, पता नहीं फॉर वट एवर रीजन. हेल्थ बहुत ही मुश्किल से हम उसके लिए पैसे अप्रूव करते हैं. अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं, बुरी की काफ़ी बातें की हमने जी. देखें, अच्छी चीज़ ये है, मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद किया इन्होंने कहा कि अच्छा यार आपके पास सेहत कार्ड आ जाएगा तो हम उसको मूव करेंगे ताकि आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट हो हर बंदे के पास. अगर आपके जिना हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, कोई बंदा जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके किसी लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सके, उसको ये घबराहट ना हो कि यार मैं पैसे कहाँ से दूंगा. तो अच्छी कोशिश की है इन्होंने. अब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हम क्या करेंगे? हम उस पर बात कर लेते हैं कि जी सबसे ज़्यादा हमारी डेथ्स कहाँ होती हैं? ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी में होती है, कार्डियक की हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं. अगर आप NICVD आपके कराची शहर में चले जाएं तो इट्स मेरा ख्याल है यूनिक ऑफ द यूनिकेस्ट प्लेस है इन द होल एशिया. परहैप्स वन अपोलो हॉस्पिटल इंडिया वाले कह रहे थे कि शायद उन्होंने थोड़े ज़्यादा कर लिए हैं एक दिन में स्टेंट, लेकिन आप NICVD के जो नंबर ऑफ स्टेंट्स वो प्लान करते हैं ना, वो कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकते आप. अब वो उनको ये कार्डियक प्रॉब्लम है. दूसरा ये आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात की ज़रा ने. फिर हम एक बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास प्रीडोमिनेटली आई सॉ अर्लियर, मैं नहीं ज्वाइन कर सका, मैं थोड़ा ये मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग थी, तो आई सॉ वन ऑफ द पैनलिस्ट वाज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. अब उनको भी पता है कि वो कहेंगे कि जी हमारा तो 15% जो है पॉपुलेशन ही डायबिटीज़ का मरीज़ है. अब जो हमारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादातर बहस, क्रॉनिक होते हैं, ट्रॉमा तो छोड़ देना, आप जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं कार्डियोलॉजिस्ट को कहेंगे तो आप कहेंगे यार ये काम कर रहे हैं तो आपको शायद दिल की बीमारी ना पड़े. आप जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएंगे, कहेंगे जी आप 20% अपना वेट कम कर लें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है. इसी तरह अब ये सारे जो अवेयरनेस है जी, ये तो पहले हमें स्टार्ट करनी है, पहले बजट अप्रूव कराना है. फिर बजट जो सा है, क्या वही ज़रा वाली बात, कौन हम क्या समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी चीज़ है कि हम इन्वेस्ट करें? एक माइंडसेट है ना जी. देखें, एक साहब के पास आप जाके कहते हैं जी CTA लगा लें, आप CT के ऊपर आपने 4,000 रुपया पर पेशेंट लेना है. अब आप 4,000 पर पेशेंट लेते हैं तो आपको वो रेवेन्यू जनरेट करता है. लेकिन आप कहेंगे कि जी अगर आप इसके ऊपर ये CT को कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट पे और उसके ऊपर आपको शायद थोड़े पैसे और डालने पड़े, तो कहेंगे यार मैं क्यों लगाऊंगा ये पैसे. तो हमें माइंडसेट पे ये बताना है कि जो जिसे कहते नहीं एक्सेसिव, जो आपकी एक्सेसिव स्पेंडिंग है जो कि ज़ाया होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट शहजाद अर्लियर मेंशन कि एक ही टेस्ट को 4 दफ़ा डिफरेंट क्लिनिक वाले रिपीट करा रहे हैं. जब आप इनको इनिशिएट करेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं वेस्टेज को. हम वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो हम प्रोविजनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को बता सकेंगे कि भाईजान आप यहाँ से kindly think about it, stopping the wastage, and so that you can actually invest it. If you invest it, you will save the money. You perhaps will have more access to better healthcare without spending so much money कि जी आपने वहाँ पे brick and mortar किसी में clinic या DHU खोलना पड़ेगा. So I think start what I would do. Yes, बहस करने वाली बात है कि यार मुझे बजट दें या हेल्थ को बजट स्पेंड किया जाए. For that's fundamental. I don't know why we as a nation, we don't spend or we don't even talk about spending or expanding our more budgeting
towards healthcare. I really don't understand. आप किसी भी कंट्री को उठा लें, आप हमसे वो शायद बेहतर ही हैं जितना हम स्पेंड कर रहे हैं और जो वो लोग स्पेंड कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं. दूसरा, एजुकेशन दी जाए कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी वेस्टेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी वेस्टेज कम होगी और आपको प्रॉफिट इन द सेंस मींस अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनका प्रॉफिट क्या होता है कि हम मोर बेनिफिट दे सकेंगे. सो वेस्टेज को कम किया जाए through the investment, save the money and start investing in IT or IoT or digital tech form, from where more budget and then more saving from the excessive double lab results, double CTs, 3 or 4 times we spend here and there. And that's the key. And कहते नहीं कि जी 90 days का आपका क्या प्लान होगा. मेरा ख्याल है 90 days का मेरा ये प्लान होगा. 180 days में हम कुछ और बात कर लेंगे. लेकिन 2 to 3 years के बाद या 4 years के बाद I truly believe we will be in a position कि हम टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ अडॉप्ट कर चुके हो, हम इसको अपनी पार्ट ऑफ डीएनए कर चुके हैं. और वो वही से होगा कि ये एक फॉरम है, चलिए तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए ये एम्स और अली ने एक कोशिश कर रहे हैं यार चले. और उस आई kudos to these guys. Honestly, I have to admit this. I was flying here and there और मैं उन्होंने बड़ा मजबूर किया and I really appreciate them. After I dialed earlier and listened to some of the other panelists, but this needs to be from the federal government as well. I mean, this needs to be, the awareness needs to be there. So that's my 2 cents. I think Makes sense. That Thank took you more very time much. than I Shahzad, anything that you would like to add? I think first of all तो मैं उन्हें ये कहूँगा ना कि they should come and they should listen to these ideas here, what people are saying, right? And second thing is, I mean, I might not be the very qualified for such type of question, but in my humble opinion, I think they need to create an environment where startups could help them. They can help them, right? So all these ideas जो इससे पहले panels में और कल भी जो मुझे पता चला है कि they are brilliant ideas जो कि discuss हुए हैं. So probably I think if they can provide them such type of environment, these people will help them to push this medical facilities to the rural areas. और ये उससे उनका बहुत ज़्यादा हल होगा. दूसरी एक जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो डिजिटलाइजेशन को पुश कर रही है और वन क्लाउड पॉलिसी और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाई दे आर डिस्कनेक्टेड. They should also, I mean, digitalization is for the entire Pakistan. It's not for only MOIT or किसी एक दो ministries के लिए. तो Ministry of Health should start taking these steps. और उसमें जो सबसे important step है वो है consolidation of the data. आपने भी जो पहले वो पैनल था उसमें आपने देखा कि everyone was talking about the data is the gold, data is important. We all understand data is important. But the question is what we are doing for that important thing. वो जो asset है जो gold है उसको हम कर क्या रहे हैं. मेरे पास 4 million, I mean just supposingly if I'm a startup I have a data for 4 million patients. 4 million इनके पास था, 4 million उनके पास है. It's not one consolidated data. And if it's not one consolidated data, you can reach to the conclusion. आप उसके ऊपर एनालिटिक्स और आप उसके ऊपर इंटेलिजेंस फैक्टर नहीं चला सकते टू फाइंड आउट के व्हाट आर द पैटर्न्स. सो यू हैव टू कंसोलिडेट. सो टू कंसोलिडेट द डेटा यू नीड वन सेंट्रल रिपोजिटरी जिसके ऊपर आप उसको होस्ट कर सकें. एंड दैट वी ऑल कॉल इट क्लाउड, राइट? सो फॉर क्लाउड आई थिंक जो मेरी तमाम स्टार्टअप्स के लिए जो रिक्वेस्ट होगी कि दे फर्स्ट फाइंड आउट वन सेंट्रल रिपोजिटरी so that वो एक दूसरे के डेटा से they can get advantage of that. And I can offer my cloud, Huawei cloud, to all of these, I mean, without any commercial. They can come, they can host their data there for the greater good, for this nation, right? Yeah. So they can do this consolidation, we can provide, we can fill this gap. तो Ministry of Health को मैं advice तो नहीं दे सकता, help ज़रूर दे सकता हूँ और वो ये कर सकता हूँ कि यार they can consolidate all this data किसी एक central repository पे रख दें. पूरी दुनिया ने ये काम कर लिया, हमसे क्यों नहीं होता? हम बात करते हैं AI की, हम बात करते हैं IoT की. भाई AI, IoT ये साइलोज में तो काम नहीं कर सकती. आप एक स्मार्ट कार है, आप उसको रोड पे लेके आते हैं विदाउट, ओके फाइन, इट्स एन AI robotics, right? But that AI robotics is zero without a central repository which we call cloud. So if you are bringing IoT, or if you're bringing robotics in or telemedicine, you need one central repository. But unfortunately, we don't have a central repository as of now. सारे स्टार्टअप्स अपने डेटा अलग अलग रख रहे हैं. दैट्स द अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स द गैप
which we need to fill. That's a Ministry of Health come to together. कोई उसके ऊपर at least ये कि कोई initiative ले ले. और जैसे मैंने कहा कि from the Huawei platform, we strongly believe in CSR. So to be honest, looking at this as a CSR responsibility, I think this is our contribution for this cause. We can bring all these guys together. ये आएं अपना उस platform को use करें और consolidate करें and let's start from there. Very generous offer from Shahzad. I think, Ali, you should take note of it. And with that, I think we'll close this panel discussion. For shield distribution, I would like to call Dr. Shahzad Khan, MD and CEO, CCL Pharma. A big round of applause for everyone. So, Zirar Sahab और खुर्रम साहब, आपकी शील्ड तो हम वहाँ फिर इस्लामाबाद भेजेंगे आपको. We can present it Thank you. to Appreciate it. Shahzad Thank you so much. right now.